हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजू चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आम कंप्यूटर में मोर प्रथम पार्टा शेष करदे। आज आम सेकेंड पार्ट डिस्कसन करवा। तो चलतु लेट न कर क्लास स्टार्ट करा। प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन आम जो चलती तो सब पार्ट तो आम 50 लगे नहीं 50 नहीं। तो चल स्टार्ट करा। कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ डाटा। को मेमोरी को आम लॉन्ग टर्म स्टोरेज यूज कर रैम रोम हार्ड डिस्क कैश मेमोरी कोड़ा ना ऑप्शन सी कौन हार्ड डिस्क इज द राइट आंसर। तो ये भितर आमर प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी कोटा मत ऑप्शन रे कहबा आम डिस्कशन करछे पूर्व क्लास रे। देन नेक्स्ट जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस ए फाइल फ्रॉम द कंप्यूटर स्टोर। कोठे आम आसेस दौचे कंप्यूटर स्टोर रखापी इनसर्ट रेट्रीव फाइल प्रिंट कोड़ा हम रेट्रीव। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ RAM इज यूज्ड टू कैच मेमोरी इन CPUs ड्यू टू इट्स फास्टर एक्सेस टाइम्स। कौन ना DRAM ना SRAM ना DDRAM ना STRAM। DRAM पे मैंने कौन ना डायनामिक रैम, SRAM कौन ना स्टैटिस्टिक रैम। ताले आंसर कौन हम ना स्टैटिस्टिक रैम। तो पिलाने कहते सर सब ऑप्शन गुड़ा डिस्कसन करिया। सब ऑप्शन गुड़ा आम जब डिस्कसन करिया ताहले वीडियो बहुत लंबा जीवरी। तो आम यहाँ जेहतु प्रैक्टिस चलती आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन तो आम क्वेश्चन आंसर आम प्रैक्टिस करुचे। तो से आम कम समय भितर जमी अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर से अनुसार आम डिस्कसन करुचे वीडियो करुचे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी टाइप्स इज यूज्ड इन सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। कोड़ा हम सॉलिड स्टेट ड्राइव DRAM SRAM फ्लैश मेमोरी EEP रोम कोड़ा हम ना फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट जीवा द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कैच मेमोरी इज टू कोड़ा ना स्टोर द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल स्टोर फ्रीक्वेंटली यूज डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फास्टर एक्सेस बाय द CPU provide the long-term storage for user files and program act as an intermediary between the CPU and the hard disk drive could have answer now option B store frequently used data and instruction for faster access by the CPU. Then next year which of the following is a type of memory that can be accessed for quickly than main memory कोड़ा वर्चुअल मेमोरी कैच मेमोरी हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क कौन हम आंसर ना कैच मेमोरी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देन नेक्स्ट द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ वोलाटाइल मेमोरी इज इट्स कौन फास्ट डाटा एक्सेस स्पीड लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी ड्यूरेबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू फिजिकल डैमेज कंपेबिलिटी विथ वेरियस डिवाइस कौन हम ना फास्ट डाटा एक्सेस स्पीड। Then next which of the following is an example of non-volatile storage कोड हमारा non-volatile storage magnetic disk USB flash drive and memory card hard drive all कौन है आंसर ना all। then next cache memory is a type of memory that is located कौन on the motherboard inside the CPU on external storage device in non-volatile memory कोड़ा हम ना इन नॉन वोलेटाइल मेमोरी। देन नेक्स्ट द मेमोरी दैट कैन नॉट बी accessed डायरेक्टली बाय प्रोसेसर इज इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी कैच मेमोरी सिस्टम मेमोरी कोड़ा हम एक्सटर्नल मेमोरी। Which type of memory is commonly used for storing the operating system software application and user files कौन कहला ना वोलाटाइल मेमोरी कैच मेमोरी नॉन वोलाटाइल मेमोरी फ्लैश मेमोरी कौन नॉन वोलाटाइल मेमोरी। देन नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी स्टोरेज इज स्लो मैग्नेटिक डिस्क रैम हार्ड डिस्क ऑप्टिकल डिस्क कोड़ा ऑप्टिकल डिस्क इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नॉन वोलाटाइल मेमोरी कोड़ा हमरा नॉन वोलाटाइल पे ट्रू it is faster than volatile memory it is used for a temporary storage of data it is primarily used cache memory it is commonly used for long term data storage could have it is commonly used for a long term data storage। then next which of the
which among the following memory is used in a digital camera? Digital camera रे हमर कौन यूज होची ना फ्लैश मेमोरी. Then next कौन कहला which memory technology allow data to be written and erased electronically, making it suitable for use in USB drive and memory card. कोडा हमर माने लिखि हबो आ इरेज भी करि हबो कोठ रे ना डबल एपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तार फुल फॉर्म हैला. देन नेक्स्ट गिव एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस रो कोटा हमर एग्जांपल कोन कहला ना फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क सीडी रोम ड्राइव फ्लॉपी डिस्क कीबोर्ड ईयरफोन फ्लॉपी डिस्क कीबोर्ड सीडी रोम ड्राइव फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क कीबोर्ड कोडा ना फ्लॉपी डिस्क हार्ड डिस्क सीडी रोम डिवाइस. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. देन नेक्स्ट the processor of copying data from a memory location कौन reading controlling writing sharing कोड़ा हबो reading is the right answer. Then next which of the following is a magnetic storage device? कोड़ा हमर magnetic storage device CD DVD HDD BR disk कोड़ा हबो ना CD is the right answer. Then next which memory type is used to store the firmware of electronic devices such as routers, printer and digital camera? कोड़ा हबो ना डबल ए पीरोम ना एसराम डीराम पीरोम एटा भी से सेम हबो कोन ना डबल ए पीरोम. देन नेक्स्ट which among the following is a cloud storage service offered by Microsoft? Microsoft द्वारा कोटा cloud storage हमर Skype, Mcqtop, Dropbox, OneDrive. OneDrive is the right answer. The process of reading data from optical discs such as a CD or DVD is performed using कौन ना laser beam. Then next which of the following has the highest storage capacity? Highest storage capacity कोटा हमर ना Blu-ray disc. Then next the storage capacity of a secondary memory device is typically measured in nanosecond, byte or kilobyte, megahertz, gigabyte or terabyte. कोटा हबो ना gigabyte and terabyte. Then next 24 number कौन कहला ना dividing the physically hard disk memory into logical memory is called indexing, aggregation, database कौन partition कोड़ा हबो ना partition. तापर कौन कहला 25 number question which type of secondary memory offers the fastest data access time and commonly used as the main storage in modern laptop and desktop? को secondary memory टा हमर fastest data access करछि एबिर modern laptop आ desktop रे. 25 number कौन कहला ना हार्ड डिस्क ड्राइव सॉलिड स्टेट ड्राइव ब्लू-रे डिस्क यूएसबी ड्राइव कोड़ा हबो ना हमें हार्ड डिस्क यूज करछे. देन नेक्स्ट 26 नंबर कौन कहला देखिबा the secondary memory that comes fixed internally on your computer is कौन हार्ड डिस्क. देन नेक्स्ट the primary use of a USB flash drive is for long term data backup, archival storage, storing and transferring data between computer and device, high speed data access for gaming. कौन हबो ना storing and transferring data between computer and devices. Option C is the right answer. Question 28 कौन दिला ना any electronic holding place where data can be stored and retrieved later whenever required is dash memory, drive, disk, circuit. कौन हबो ना मेमोरी हबो. मेमोरी का हम यूज करछे. Which secondary memory device is commonly used for portable data storage, is small, lightweight and easy to carry around? एटा कौन ना Blu-ray disc. Option C is the right answer. Then next
Computer memory is made up of a large number of cells. Each cell is capable of storing dash of information in the form of a binary number. कोड़ा 1 bit 2 bit 3 bit 4 bit कोड़ा 1 bit हबो. Then primary memory is used for storing dash. Primary memory टाको हमें कोथ में यूज करते हैं. Data only, calculation only, program only, all of them. कोड़ा all of them. Which of the following error occur when software tries to access protected memory? कौन segmentation? कौन fault? Segmentation fault, display time error, IO error, runtime error. कोड़ा हवा segmentation fault. Then next which of the following is used to increase the speed of the CPU? Cache memory, virtual memory, main memory, flash memory. कोड़ा cache memory is the right answer. Then next a register is defined as register को हमें केमिति define करूचे? The group of latches for storing one bit of information, the group of latch for storing n bit of information, the group of flip-flop suitable for storing 1 bit information, na the group of flip-flop suitable for storing binary information. कोड़ा हबो ना the group of flip-flop suitable for storing binary information. Option D is the right answer. Then next 35 number कौन कहला ना the time for the actual data transfer after receiving the request for data from secondary storage is referred to as this: transfer time, movement time, access time, data input time. कोड़ा ना option C is the right answer, access time. A tape drive offers dash access to data: timely, sporadic, random, sequential. कौन sequential is the right answer. The process of reading data from a magnetic storage device such as a hard disk is known as accessing, viewing, burning, formatting and defragmenting. कौन हबो? So A, accessing is the right answer. The main memory of a computer must be large enough to contain the active part of dash: the operating system, the application, input output storage and working storage, all of this. Could have na the application is the right answer. Memory card are commonly used in which of the following device? Memory card commonly क्यों थे हमें यूज करचे? कौन प्रिंटर, मॉनिटर, कैमरा, स्पीकर. कोड हबो कैमरा रे हमें यूज करचे. The primary advantages of a pen drive is its high storage capacity, durability and resistance to physical damage, low cost per gigabyte, portability and plug and play convenience. कोड़ा ना portability and plug and play convenience. Then next data on a floppy disk is recorded in a rings called dash: sectors, ringers, rounders, tracks. कोड़ा ना tracks. Then 42. The processor of all computers, whether micro, mini, mainframe and must have. ALU, primary storage, control unit, all of the above. कौन all of the above पिलाने ALU रे फुल फॉर्म कौन मते कमेंट रे कहबो. To what temporary area can you store, test and other data and later pass them to another location? The clipboard, ROM, CD-ROM, the hard disk. कोड़ा हबो ना option A is the right answer. Then next what is the difference between a CD-ROM and CD-RW? कोड़ा ना ऑप्शन ए कौन कहला ना they are the same, just two different ROMs used by different manufacturer. A CD-ROM can be written to and a CD-ROM cannot. A CD-ROM can be read written to, but a CD-ROM can only be read from CD.
A CD-ROM holds more information than a CDR-ROM. कोड हबो ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पेन टा कुआडे गला एठी पेन टा काटी दबा। द मेन डायरेक्टरी ऑफ ए डिस्क इज कॉल्ड डैश डायरेक्टरी कौन ऑप्शन ए रूट। What does storage unit provide? Place for typing data, storage for information and instruction, place for printing information, all of the above. Could have option B is the right answer. Then what is the term used for measurement of how fast data moves from one place to another? कौन beats per second. Option B is the right answer. Then arrange in descending order of the unit of memory TB KB GB MB. हमर पिलाने से कौन कही सदाबले एटा मन रखु से कौन पचार डिसेंडिंग ऑर्डर ना असेंडिंग ऑर्डर कौन प्रथमे बड़ रु सान बड़ किए ना टीबी टेराबाइट जीबी कौन गिगाबाइट एमबी मेगाबाइट तापरे केबी कौन किलोबाइट कोड़ा हम ताले ना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यदि असेंडिंग कही था ताले कौन होता ना किलोबाइट मेगाबाइट गिगाबाइट तापरे कौन टेराबाइट है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 की 39 है जाइए प्लान। Which of the following correctly list computer memory type from highest to lowest speed? कौन कहला ना सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी कैच मेमोरी सीपीयू रजिस्टर कैच मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज मेन मेमोरी सीपीयू रजिस्टर कैच मेमोरी मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज कैच मेमोरी सीपीयू रजिस्टर मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज कौन हम ना सीपीयू रजिस्टर तापर कैच मेमोरी मेन मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन लास्ट क्वेश्चन द डाटा स्टोरेज हेरिटेज कंसिस्ट ऑफ कोथरे बाइट्स बीट फील्ड रिकॉर्ड फाइल एंड डाटाबेस बीट्स बाइट्स फील्ड्स records files and database bit byte record files and database bit bytes files record and database कोड़ा हबो ना bit bytes file record files database option B is the right answer। तो इपर भाव में आमर केते पार्ट 2 आमर मेमोरी रो सरला। देन लास्ट आ 50 टा क्वेश्चन आनिमा पार्ट 3 रे कंप्यूटर मेमोरी। तो प्रीवियस क्वेश्चन आनिमा बड़का जहाँ रहा। तो प्लान रही चैनल को लाइक आउ कौन सब्सक्राइब करदेव। थैंक यू।